next guest speaker is letting you know about how you can make your startup a successful startup in Pakistan and exist internationally as well. Ladies and gentlemen, he has 17 years experience of sales, distribution, trade development, and channel development with leading multinational companies, having exposure to both direct and indirect channels in Pakistan and southern Punjab as well. Ladies and gentlemen, during his career, he achieved an immaculate record of new product launch and relaunch of famous products like Pepsi, Mountain Dew, 7-Up, Coca-Cola, NH, and Pampers, etc. Ladies and gentlemen, please welcome the Chief Sales Officer of Dawn Bread here, Mr. Shah Jahan, on stage with a huge round of applause. Start हमेशा tough होता है. You people knows because you are from startups. तो start ही लेना किसी भी चीज़ का ज़रा challenging होता है. फिर उसके बाद अच्छा जी, my introduction already has done very well, even beyond my expectations. So I will start, and I want to first of all appreciate you all with John Elias, this poetry that मुद्दत से तुम कोई काम कर रहे हो, मुद्दत से तुम नौकरी कर रहे हो, अब कोई काम क्यों नहीं कर लेते? तो you people are much better than particularly from me that you are doing your own job. You are living for your own self. You are generating your own ideas. While I myself is employed from last 21 years. So you know better with me. But just what I saw and during my experience with 6 companies and consultancies, which I had done with few of local and MNCs companies like Dilma Tea from Sri Lanka, Carabao Energy Drink in Thailand, where I done a consultancy. So whatever I got my experience, I am sharing with you. The day before yesterday, I received a call from Fakhar Saab to speak here, although I was too much occupied. लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा तो I asked them कि what would be the topic to I speak. He was just thinking and reviewing, but फौरन मेरे ज़हन में जो topic फौरन आया, why startup fails. Because ये जब तक हमें ये reasons न पता चले कि startups क्यों fail होते हैं, ताकि वो we can't repeat. ठीक है, ये बहुत important है कि we can't repeat कि वो चीज़ें जो लोगों की एक failure की वजह बनी हैं, वो चीज़ें अगर हम नहीं रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस इंशाल्लाह. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर आ जाऊंगा क्योंकि मुझे देखने में मसला आएगा कि कौन सी स्लाइड है या कौन सी नहीं है. तो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. व्हाई स्टार्टअप्स फेल. तो कहते हैं कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस. बेसिकली फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. Failure is actually the part of success. Failure is actually the process. तो एक तो ये है कि failures जो है ये बिल्कुल opposite नहीं है. ठीक है, success का. तो ये याद रखिएगा. फिर गोरा ये कहता है कि fail quickly, learn fast and pivot wisely. ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर fail ही होना है, एक process है, एक learning curve है, तो उसको जितना आप expedite कर लें उतना बेहतर है. हाँ, ठीक है. तो fail quickly, I means के day before yesterday, I was meeting with one of the startups in the Pakistan who just wind up their businesses a couple of months back. They were talking me that if we do this and if we did this, तो हमारा जो है ये जो है failure wouldn't be happened. तो what I said them कि नहीं, ये failure तो होना था because of the external factors. What was the external factors? External factor was when you do a JV, joint venture creation, when you create, तो क्या होता है कि आपको you have to return the money in the dollars because you have taken the money in the dollars. तो अगर आपने डॉलर्स में किया और जिस तरह हमारा रुपीस जो है वो डीवैल्यू हुआ और जिस तरह हमारा तकरीबन 100% से ज़्यादा जो है रुपीस वो डीवैल्यू हो चुका है, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं करता. तो जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से यू फेलियर तो अल्टीमेटली एक वो कहते हैं ना नुक्ता दीवार था. इट वाज रिटन ऑन द वॉल.
ठीक है, लेकिन आप क्या करते, उसको लिंगर ऑन करते थोड़ा 6-8 माह 10 माह आप उसको स्लो डाउन करते। तो जो स्लो डाउन है, इट्स आल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ना, अनलेस के कोई सडन कोई मैजिक हो जाए, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए मुल्क में और यू टर्न अराउंड कर दो, ठीक है। अदरवाइज फेलियर को, किसी चीज की अनसक्सेसफुल को लिंगर ऑन करना भी कोई वाइज स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। तो सो व्हाई ही सेड दैट फेल क्विकली, लर्न फास्ट। नेक्स्ट स्लाइड। स्टार्टअप ओकेशन क्या है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और जब ये मैंने बनाई, when I prepared that, तो I was thinking some sort of our own local, जो हमारा, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सेठ कहते हैं, उसको जहन में रख के मैंने बनाया कि वो क्या है कि न्यू बिजनेस, न्यू इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और पैशन। मोस्ट ऑफ द टाइम the one of the reason of failure that we are missing this passion। हम एक दूसरे से सुनते हैं कि कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल है जी, टीवी चैनल लगाना चाहिए जनाब, रियल एस्टेट के बिजनेस में आना चाहिए, ठीक है, कोई कॉफी शॉप बना लेनी चाहिए, कोई कोई फूड सर्विस का अदर कोई रेस्टोरेंट लगा देना चाहिए, लेकिन वो हमारा पैशन नहीं होता। कोई रिटेल स्टोर बना लेना चाहिए। जस्ट मेरे एक दोस्त ने अभी ही ओपनड अ रिटेल स्टोर, लेकिन ट्रस्ट मी, रिटेलिंग इज नॉट हिज पैशन, ठीक है। जस्ट ही थॉट दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन, मिसिंग ऑफ द पैशन विच लीड्स टू द फेलियर डेफिनेटली। तो दिस इज अबाउट द स्टार्टअप्स। अगर परफेक्ट स्टार्टअप है तो there are the 4 ingredients must be there, that be innovation, technology and passion. Otherwise this is just a business idea in a red ocean strategy. You people know red ocean and blue ocean? Yes, red ocean is your existing market. There are so many competitors, and blue ocean is to create a new market in existing segments. Would you like someone to give an example of a blue ocean? Any example in Pakistan's scenario? सर डीजी खाता एप्लीकेशन है, नया स्टार्टअप है, 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था। सही होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। But I don't want to take the name of anyone के ये एक न जाए गुमान कि I am promoting any company of my friend। ठीक है। So ये जेज कैश या इजी पैसा आप कह सकते हैं सर, या करीम भी कह yes, at सकते the हैं, start this was क्योंकि सर इनका कोई कॉम्पिटिटर अभी तक नहीं है, तो करीम आप देखने जैसा। ठीक है। जो टेलीनार की बात है, इजी पैसा की, उसको जो एडवांटेज है वो एक मार्केटिंग का लॉ है। आई वांट टू शेयर विद यू, इट्स बेटर टू बी फर्स्ट देन टू बी बेटर। इट्स बेटर टू बी फर्स्ट देन टू बी बेटर। इवन टू बीइंग अ बेटर इज बेटर कि आपने कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया है। These lines are one of my favorite lines. कि two roads diverged in a wood and I looked the one less traveled by and that has made the difference. तो difference क्या create करता है? क्या difference create करता है as per these lines? Less traveled. जिस रास्ते पे कम लोग जाते हैं, where few people travels, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं? What we do usually? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये थोड़े दिन पहले मैं एबटाबाद था, तो आई वांट टू गो टू द इलियासी मास्क विद माय किड्स। तो वो एक जगह से रोड ब्लॉक था काकूल एकेडमी के पास, तो मैं अचानक एक दूसरी रोड से हो गया, राइट टर्न ले लिया मैंने, और होते होते टर्न करते तो मैं आई रीच देयर। तो मेरे बच्चों ने पूछा कि पापा आपको ये रास्ता आता था, पहले आप आए हुए हैं? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं आपको कैसे पता चला? मैंने कहा एक रिक्शा जा रहा था और 2-3 कारें जा रही थी, तो आई थॉट कि नहीं कोई फॉलो कर लूं। तो यूजुअली वी फॉलो लाइक दैट। हम इस तरह बिजनेस में भी अगर यही चीज हम जब अपनाते हैं कि सारे यही कर रहे हैं तो हम भी यही कर लें, तो फिर सक्सेस तो एक को ही मिलनी है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। 3 P's of business success which are very important: people, process and product. In the Pakistani scenario, which I observed that the local owners worked on this P, on people sometime, but not on their capabilities, just on people. ठीक है कि ये कहाँ काम करता था, ये CCI में था, इसने PNG में काम किया है, ये लम से पढ़ा हुआ है, that's fine। ये तो एक people पे, लेकिन not on the capability। लेकिन anyhow,
वो इस पी का ख्याल रखता है. एंड देन द मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा रखता है, बट नॉट ऑन द रिसर्च साइड. दैट बिकम देयर नेगेटिव. क्योंकि शुरू में आपको यू हैव टू टेक अ वेरी हम्बल स्टार्ट, बिकॉज यू हैव टू लर्न विद योर एक्सपीरियंस. You have to learn with your experience. And they missed on this thing because this is most of the time the software oriented. You miss that. और फिर जब एक सर्टन नंबर पे पहुंचता है तो फिर वो रिवर्स लग जाता है. तो आप देखेंगे हमारे लोकल स्टार्टअप्स एक सर्टन नंबर जब उन्होंने अचीव किया तो उसके बाद रिवर्स लगा. बड़ी बड़ी कंपनियां हैं. एक पाकिस्तानी कंपनी है, उसको 100 इयर्स प्लस हो गए हैं. वो 1935 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी और अभी तक वो 2-3 बिलियन पे खड़ी है. जबकि बांग्लादेश got freedom in 1971, separated from us, or this time they have 85 brands which are $1 billion plus. We don't have even a single brand which is $1 billion plus. Because एक certain level पे जाके ना हम, we are not working on the process, and secondly we diversify ourselves. We don't focus on our core competency, which we will discuss later on. One of the reasons of failure is inexperienced founder, that is inexperienced jockey, which is called in the business language. उसकी there are so many examples. ठीक है कि उनका उस चीज़ में ना पैशन होता है, ना एक्सपीरियंस होता है, ना स्किल्स होता है, which I discussed, कि just listen from their friends and they do and they start and they initiate that business. तो जो कि आगे जाके एक फेलियर की वजह बनती है. What do you think? ये जो जितने मीडिया चैनल्स हैं पाकिस्तान में, ये सारे क्या इनका कोई सहाफ़त से, जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक है? बस ये थॉट कि हाउ टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस. जो इनका रियल स्टेट का बिजनेस है, जो इनके दूसरे बिजनेसेस हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट द बिजनेस, एंड दे स्टार्टेड. इनका जर्नलिज्म से क्या ताल्लुक है? ठीक है. Then lack of market research. Horse is not attractive in the market. Basically, in the business language, jockeys are the founders and horses are actually a business ideas. So lack of market research is also an important factor, the cause of business failure. तो बहुत सारी जगहों पे मार्केट रिसर्च नहीं होती, चीज़ नहीं होती कि आइदर उस चीज़ की ज़रूरत है भी सही या नहीं है, मार्केट की दे थिंग्स आर डिमांड है या नहीं है, और उसमें दे पीपल डोंट कीप एंड्स फर्स्ट इन द माइंड कि एंड्स क्या है, उसको टेक्नोलॉजी किस तरह रीवैम्प कर सकती है, वो किस तरह टेक्नोलॉजी उसको चेंज कर देगी वो चीज़ की, क्या वो 3 साल 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल के बाद है या नहीं. और इतना लंबा तो हम सोचते भी नहीं है, बिकॉज वी आर सेल्फ सेंट्रिक पीपल, वी आर थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ. हम तो ये नहीं सोचते कि उसके बाद क्या होगा. ठीक है. देन जैसे मैंने बात की एग्रेसिव ग्रोथ, हाई एक्सपेंशंस. हम जब हाई ग्रोथ, हमें जब थोड़ा सा व्हेन वी गेट अ गुड रिस्पांस तो वी गो ऑन हाई एक्सपेंशंस. हम बहुत अपनी स्पीड को फास्ट कर देते हैं. तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट वही निकलता है जो यूनाइटेड स्नैक्स ओए होए का निकला. ठीक है, ये सबसे बड़ी मिसाल है. यूनाइटेड स्नैक्स ओए होए जो था, एट द टाइम इट बिकम्स अ वेरी सक्सेस स्टोरी इन द पाकिस्तान इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. लेकिन उन्होंने मार्केट्स को जिस तरह भरा, उस तरह जब ऑफ टेक नहीं आया, मार्केट से वो प्रोडक्ट उस तरह उठा नहीं है, तो वो फिर वापस आया. ठीक है. तो वन रीजन. देन पुअर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग. आई डोंट नो व्हाट इज एग्जांपल रिटन ऑन हियर, बट अनदर एग्जांपल इज अ हलीब. लाइक डेयरीज में आपको सेल करना मसला नहीं है. डेयरी में यू मस्ट नो कि शेल्फ के ऊपर आपको क्या रखना है. जितने लिक्विड हैं, जितनी हाई पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, यू मस्ट नो कि शेल्फ के ऊपर कितना स्टॉक रुकाया है, कितनी कंजम्पशन होगी. ठीक है. हमारी लैंग्वेज में जो मैं अपनी टीम्स को कहता हूँ, जब भी हम व्हेन एवर वी लॉन्च अ प्रोडक्ट, तो मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ी सी भूख रख के मार्केट में चलना है. ठीक है. लेट्स से वी गिव अ एग्जांपल दैट at one store you give the 5 products and the offtake is a 4. At the other store you give 10 products and the offtake is a 5 SKUs. At one 4 and other is a 5.
When you will go at the store where 4 products has been sold, वो कहेगा बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इट्स एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स, ब्रिंग मोर प्रोडक्ट्स. और जिसके ऊपर 5 बिके हैं, जहाँ पे 10 नहीं है, वो कहेंगे अभी तो बहुत पड़ा है, अभी तो स्लो है. ठीक है, विच आई ऑब्जर्व विद द पैसेज ऑफ माई टाइम विद माई लर्निंग. तो अभी नहीं चाहिए मुझे, और वो शायद 2 3 4 माह 2 3 4 मंथ्स वो आपसे ऑर्डर नया जनरेट नहीं करेगा. ही डिड नॉट जनरेट अ न्यू ऑर्डर्स. तो सो प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. देन क्या है जी, फाउंडर्स बिहेवियर, सेल्फ एस्केलेशन वर्सेस परसिस्टेंस. It's a very important thing. There is a very thin line between self-escalations and persistence. Do you people know about the self-escalation? What is the self-escalation? Trust me, there is no wrong or right. But I learned that self-escalation is when you find something going negative, you put even more energies into it. Why? Because your self-ego is a much ahead. आप उस चीज़ को मतलब, और पाकिस्तान में हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ एगोइस्टिक हैं, हम लोग बहुत बायस्ड हैं. हमने इलामा इकबाल के जो खुदी का था उसको बहुत ही गलत लिया है, तो हम वी पुट मोर एनर्जीज इनटू इट. तो ये सेल्फ एस्केलेशन में होना और परसिस्टेंसी में बहुत फर्क, एक थिन लाइन है. इसको पहचानने की, रिकॉग्नाइज करने की, देयर इज अ नीड टू डिफरेंशिएट इट. ठीक है, कि सेल्फ एस्केलेशन क्या है और परसिस्टेंस क्या है. तो मस्ट नो कि जो रियल टीम्स होती हैं उनमें देयर आर 3 हैबिट्स इन द रियल टीम्स. व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, द नंबर 1 हैबिट इज इन द रियल टीम इज दैट दे इंडिविजुअली लर्न. नंबर 2 इज दैट दे म्यूचुअली लर्न, collective learning. And the third is the most important. What should be the third? Real team की क्या पहचान होनी चाहिए? What should be the identity? थर्ड आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? एक तो हो गई सेल्फ लर्निंग, दूसरी हो गई कलेक्टिव लर्निंग, एंड व्हाट वुड बी द थर्ड? जस्ट गेस, एनी आइडिया? वो तो लिसनिंग होगी तो लर्निंग होगी, अदरवाइज लर्निंग भी नहीं होगी, ना सेल्फ होगी ना कलेक्टिव होगी, कोई भी नहीं लर्न करेगा. और इसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं प्रोसेस लॉस. एक होता है प्रोसेस गेन. प्रोसेस गेन होता है सिनर्जी, कि जब 2 या 4 लोग इकट्ठे गए हो तो सिनर्जी होती है, यानी 1 + 1 11 होता है. लेकिन जहाँ पे प्रोसेस लॉस होता है, जहाँ पे नो वन लिसन टू ईच अदर, वहाँ पे 1 + 1 जो होता है ना, वो 1.5 या इवन लेस देन 1 भी हो जाता है सम टाइम. ठीक है, तो दैट इज अ प्रोसेस लॉस जो आप बात कर रहे हैं, जहाँ लिसनिंग नहीं होती. सो लिसनिंग इज एज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो और तीसरा क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? जस्ट एन आइडिया. कोई रिचर्ड हैकमैन जो है आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, आप भी बताएं. वो तीसरा जो रिचर्ड हैकमैन अपनी बुक लीडिंग टीम में कहता है, इन द रीडिंग टीम में वो कहता है देयर आर 3 आइडेंटिटीज ऑफ लीडिंग टीम्स. नंबर 1 सेल्फ लर्निंग, नंबर 2 म्यूचुअल लर्निंग, एंड नंबर 3 इज अ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, दैट दे पीपल आर सेल्फ अकाउंटेबल. ठीक है, तो जब आप सेल्फ अकाउंटेबल होंगे और अपने आइडियाज को, एक और बुक है एग्जीक्यूशन, मस्ट लर्न मस्ट रीड. ठीक है, एग्जीक्यूशन आप में से आई विल रिकमेंड टू एवरीवन टू रीड दैट बुक. ठीक है, तो उसमें एग्जीक्यूशन की जो सबसे बड़ी बात है, उसमें 2 चीजें जो मुझे अच्छी लगी, विच अट्रैक्ट्स मी मोर. वन इज दैट इज द रोबस्ट डायलॉग, एंड द अदर इज दैट एग्जीक्यूशन रीशेप द स्ट्रेटजी. When you go to the execution, even if you have anything wrong with the strategy, execution reshape the strategy. So execution is much more important than any strategy, any planning. The superior execution, the execution with the discipline. ठीक है, तो उसमें जो है persistency तो important है, लेकिन self escalation जहां आ जाए, you have to change yourself and unfold other things. Then misaligning process, growth and production. Sometimes your process is not aligned with your process, is not aligned with your growth, production, with your values. आप में से कितने लोग गोल्फ खेलते हैं? How many people play golf? Anyone play golf? So no one play golf. Okay, but in the golf you don't need a power. You don't need a muscle power. In the golf, even my
नहीं, in the golf you need a harmony, you need a symmetry, you need a synchronization in your body. ठीक है, just need that your body should move in the same direction at the same time. ठीक है, and you always in the golf you have to focus on the impact, not के बाल कहाँ पे जा रही है. You have to focus on the impact till last. And in the golf you have to do the right things even no one is looking at you. आपने अपनी बॉल को चेंज अपने मर्जी से नहीं होना. You have to change according to your ball. So why golf is my passion actually. This is the reason, because of golf teach me the integrity, because golf teach me to how to focus on the impact. Where is the impact? Then team issues. Must remember, team is very important. Whenever we hire the team, we hire according to our own some sort of whatever the stuff we like. ठीक है, we don't diversify our team. और फिर हमारी लोग टीम्स के एक ही इंडस्ट्री में घूमते रहते हैं. बैंक्स के लोग हैं, सॉरी टू से, तो वो बैंक में ही रहेंगे. एफएमसीजीज के लोग हैं तो वो तो खैर चले जाते हैं बैंक शैंक में. लेकिन बैंक के लोग मैंने देखा है बहुत कम हमारे पास आते हैं. ठीक है, तो दे मस्ट कम टू अस. हम भी बड़े सही लोग हैं. तो उससे क्या होगा, देयर मस्ट बी क्रिएट अ डाइवर्सिफिकेशन इन द टीम. डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. गोरा जो है अमेरिकन, वाई हायर द एशियंस, वाई हायर द अफ्रीकन्स? Just because of to create a diversification. Sometime if you appear in the interview in the Google, तो एक बंदा वो उनको पर्सनैलिटी के 4 ट्रेड्स होते हैं ना, एक लीडरशिप के देयर आर 4 ट्रेड्स. उसमें एक होता है नेगेटिव थिंकर्स, 4 क्रिटिकल थिंकर्स. वो भी टीम के लिए इंटेग्रल पार्ट है. टीम के लिए वो भी ज़रूरी है जो आपको चैलेंज करे. बट इन आवर कल्चर वी डोंट लाइक अ पीपल हु चैलेंज अस. तो आपको वो बंदा भी चाहिए जो आपको चैलेंज करे, हर बात पे चैलेंज करे, जो जिसके हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जी ये बड़ा नेगेटिव थिंकर है जी, ये क्रिटिकल है जी. वी मस्ट लाइक इट, वी मस्ट एडमायर इट, वी मस्ट इनकरेज हिम. मुझे अक्सर मेरे बॉस कहते हैं कि आपकी टीम बहुत ज़्यादा शेयर करती है, हर चीज़ शेयर करती है. तो मैं उन्हें कहता हूँ अगर मैं बॉस आपको उनको इस चीज़ से मना कर दूँ कि ये जो गलत चीज़ उन्होंने शेयर कर दी है, तो वो फिर कई सही चीज़ें भी शेयर नहीं करेंगे. ठीक है, फिर उनके लिए डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि विच इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग. It would be a difficult thing. अच्छा, diversifying too early and neglecting core competencies. ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम बहुत जल्दी we diversify ourselves too quickly. जहाँ हमें पैसा मिलता है हम वहाँ पे जंप करते हैं. ठीक है, what is the focus? Do you know what is the focus? Anyone want to elaborate? Focus क्या होता है? फोकस बहुत पीछे से. फोकस क्या है? जिस फोकस से आप स्लाइड्स को देख रहे हैं या कुछ और भी? फोकस, यस, every definition is right. Actually focus, what I define is to say no to so many other good ideas. Focus is to say no to so many other good ideas which I define. लेकिन हमें जो भी आइडिया ठीक लगता है हम उसको पकड़ लेते हैं. ठीक है, एक हमारी टाइल्स बनाने वाली कंपनी है, उसका 2017-18 में ऐड आता था कि वी बिकम द लार्जेस्ट एशियन कंपनी इन 2025. हम 2025 में वी बिकम द लार्जेस्ट टाइल्स मैन्युफैक्चरर कंपनी. शायद वर्ल्ड ही आता था लेकिन मैंने अपने तौर पे एशिया कर दिया है. ठीक है, मैंने कहा शायद आप लोग मानेंगे नहीं तो कि हम एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगे. और 2-3 साल बाद उनका फिर ऐड आने लग गया उस कंपनी के नाम से हाउसिंग सोसाइटी का. और अब वो कंपनी काफ़ी महीनों से उसने अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरियाँ नहीं दी. ठीक है, तो बहुत क्विक अपने आइडिया पे, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर आइडिया. डोंट क्विकली डाइवर्सिफाई योरसेल्फ.
फोकस ऑन योर कोर कॉम्पिटेंसी. एक बिजनेस स्कूल है 97, 98, 90s में, वो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल इन द लाहौर. देन दे डिसाइड, और उन्होंने लॉ में आए, बहुत सारी दूसरी चीज़ें की, और अब उस स्कूल के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, दाखला जारी है, जब भी आप उस साइड पे जाते हैं. Then neglecting cash flow for asset accumulation. This is the biggest thing. Cash is your king actually. हम cash flow manage नहीं करते. We accumulate the assets. हम assets पे काम करते हैं. एक कंपनी जिसकी मैंने कंसल्टेंसी की, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. वो कंपनी बड़े थोड़े से टाइम में 20 बिलियन पे पहुंच गई. बहुत ही थोड़े टाइम में दे टच द 20 बिलियन रेवेन्यूज. और फिर ये हुआ कि वन ऑफ द एम्प्लॉय जॉइंड देम एंड ही आस्क्ड कि हम जो है ना, अगर किसी बंदे से हमने 100 मिलियन लेना है ना, तो वी विल टेक प्लॉट्स इंस्टेड ऑफ कैश on cheaper rates, and then the plot will appreciate, और हम उसको तकरीबन जो 10 मिलियन है, उसने हमारे सेठ को, बिजनेस ओनर को दिखाया कि इट वुड बी 20 मिलियन. इस तरह हम इस प्रोजेक्ट्स में 20 मिलियन लेंगे 10 मिलियन की जगह पे एक्चुअल. तो हम उसकी जगह पे उससे प्लाट लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, बहुत सारे पैसे लेंगे, अपना एसेट्स लेंगे, इस तरह कोई प्लाजे में कोई लेंगे चीज़ें, जिस तरह का कोई दे सकेगा. वी विल प्रेफर टू टेक इट. थोड़े ही अरसे में वो कंपनी के पास दे हैव अ जीरो कैश फ्लोज, और जो जर्मन कंपनी जिसके साथ वो काम करते थे, दे स्टॉप देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है. एंड देयर प्रोजेक्ट्स आर, हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर कंप्लीटेड एंड द हाफ ऑफ जर्मन कंपनीज रिफ्यूज टू गिव देम द स्टॉक फॉर फर्दर टू सेल. और अब वो कंपनी, द कंपनी इज स्ट्रगलिंग. मुझे उस कंपनी का वैसे नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है. एक्चुअल द प्रिंसिपल कंपनी वाज अ डेक्कन एयर कंडीशंस, और वो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग जो है वो इंस्टॉल करता था, उनका जो पाकिस्तान का जो वो था. ठीक है. तो आई वाज देयर कंसल्टेंट इन 2018. तो उनका क्या प्रॉब्लम था, इट्स ऑल अबाउट. थैंक यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर मोर देन वेलकम. No question? No question is a good question, perhaps. Thank you. Assalamu alaikum. I am Hani from Yemen. I am not Pakistani people. Okay. In my country, we noticed that there is not Pakistani products in our country. Also in Emirates, also in Saudi Arabia. Why? Pakistani can't marketing their products. This first one. We not only Pakistanis can export their people, labor and experts, but product no. For example, in my country we get the Pakistani products only the fans. If you focus about the Pakistani products, you need to, mashallah, have high quality. But I think it is the problem in the marketing. Why Pakistan is not open in the world about this field? Thank you. Excellent. This is not actually a question. This is actually an input and feedback. And I appreciate your feedback and your input. This is, I believe, one of the best input, which we also know. This is actually our biggest area of the improvement, that we are very poor in marketing. We are a very poor marketer, but we are very good in manufacturing because we are a very hard worker people. We are a very honest people, honestly speaking, but we are not good to build our own perception. For example, we are the best manufacturer in the world for the Adidas footballs.
which is produced by the Forward Sports Alcott. We are the manufacturer of Nike. We are the manufacturer of Levi's. Our US apparel is manufacturing Levi's for Levi's International, but unfortunately we don't have our own brand, which I also mentioned that we don't have even our single brand. We are not building our brand, we are actually producing our product. So why we are in these conditions? Otherwise we might be ahead of America if we are a good marketer. Okay. Thank you. But I work in the, I have company in Yemen. I buy products from other sources. We only export our products from China and sometimes from India. Why? Pakistan, I can't buy from or important products from Pakistan. For example, China has Alibaba apps. I can explore and I know what the factory is available or what their products they and India have India Marts. Pakistan no. We don't want the factory in Pakistan and where is their products. The information is less about this field. Why Pakistan don't care about that? To open about the world, to open marketings in other country, not to export only people who are working like a labor. It is, I think, if it care about export their products and open malls in other country. Malls, Pakistani malls. For example, in Dubai, there is Dragon malls. It is for Chinese product. There are no Pakistani mall in Oman or Yemen or Saudi Arabia. No Pakistanis. If Pakistan focus about this point, I expect it will help. Thank you about this. So definitely we will work on these grounds, inshallah ta'ala. Now we are very committed. ठीक है? So, answer to your question. As we had a session before as well, and I was talking about my topic as well. So, we already know this that as far as our country is concerned, we are hardworking people. But the dilemma is that we go in comfort zone very quickly. As soon as our companies go to a level of SME, we think we have done much. We don't think at the next level. And this is where we need to really work hard and introduce our products in the international market as well. So as in products are concerned, we are not that bad. Like our mangoes are going all across the globe. Then we are manufacturing footballs. And we are, Sialkot is known, pretty known for that as well. So as far as all this is concerned, the basic issue is that we need to really rectify and solve the problem, and the companies that are basically done their work, like companies like Urban Soul, a big name in Pakistan, Services Group of Industries, and big names, companies like who can really go in international market and have their shops over there and market Pakistan products over there. We need to bring them under one umbrella, have a talk with them, do brainstorming sessions. This will be inshallah our next step. We need to do this, and as far as I know, Barize is already doing business internationally. They are operating in different countries, and our cloth is known really like Barize's. Barize is a clothing wear for men, women, children, kids, everything. So they are doing that, and they are doing an amazing job internationally. Zara Shah Jahan is also going internationally. So there are a few brands who have this awareness, came up in Pakistan. Great companies are going internationally. And inshallah, shortly Pakistan will be presenting their own products and having their own outlets abroad as well. Thank you. Any other questions, please? If you have a question, you can raise your hand. Okay.
Mine is like a question and a sort of like comments, right? I know in Nigeria we have Indians, like they set up businesses, they even employ Nigerians, but just that there's every possibility that we might have Pakistanis because we don't know how to differentiate Indians and Pakistanis. So I don't know, you might have that idea, but I believe that I think Pakistan needs to extend beyond just Pakistan and outside. So I think that's just my comment, right? Yeah, we have to create our own diversification. We have to create our own identity. Definitely, these are our areas of improvement. Otherwise, we will be a much progressed country, no doubt about it. We also know each other, and now we are. This is the desperate time. Must know कि जो nations बनती हैं, nations build at the. I also wrote a article that leadership built on a turbulent time. I can share with you if you require that. Turbulent times build our nations. And this is our turbulent times. This time we are actually trying to build ourselves. Or inshallah, you will observe in a couple of years that we will out of these all havoc. Inshallah ta'ala. I am sure about it. Okay, then if you believe good about yourself, वो कैन बिन चार्ट कहता है if you feel good about yourselves then you can produce a good results. Now we are feeling good about ourselves, we are gaining confidence, alhamdulillah. Yes, and one more thing, it just came to my mind, and I know there are Pakistanis too, especially in Nigeria, and I've heard a lot of like great things about them. There's a company in Nigeria called Right Foods Limited, and I have a friend that works there, and he talks about his Pakistani colleagues, husband and wife working together, and he says a lot of great things. I think they're talented people. So I do not believe in that notion that Pakistanis are just restricted to Pakistan. I think they're diverse. I think they're everywhere, and they do great things because wherever you see them, plus Indian and Pakistan, because I think they have a lot of things in common, right? They stand out. There's this thing that you can tell about them. We have them in Nigeria. They are employers of labor and they contribute to the economy to an extent. That's just my contribution. Okay, did I speak too fast? I spoke too fast, right? I'm so sorry, please. Anyone want to comment on it? Okay, I said that. One other thing I want to put out there is that I also believe Pakistanis extend beyond Pakistan, like they spread their tentacles outside Pakistan. Like in Nigeria, there's a company that I know, like Right Foods. I know I have a friend there that's, he has colleagues that are Pakistans, and he says a lot of things about them, how energetic, how their passion, their zeal towards work, and what they contribute to the economy. And I know that Pakistans and Indians, like I think they have a lot of things in common. Yeah. Yeah, so that's why I said there might be other Pakistans around, right? Because you cannot differentiate them that much because they have similar this, but I know that Indians, Pakistanis, and all of that, they set up companies in Nigeria. We have Nigerians that even work for these companies, and they also work in companies set up by Nigeria, like Nigerian businesses and all of that, and they contribute favorably to the economy at large. So I believe that Pakistan are not just restricted to Pakistan alone. I think they're already spreading their tentacles beyond Pakistan. I guess they just need to like be more intentional and do more, right? But I can say, and I can attest to it, Indians, Pakistanis, we see their presence in Nigeria. You are absolutely right. One of the reasons of that we have a very low differentiation between Indians and Pakistani, and in the abroad, people first asked us, "Are you belongs to India?" And then we told them that no, we are from Pakistan. Even I also observed last year when I traveled to Turkey, the one of the reasons that we Pakistani travel less as compared to Indians. The population difference is also much, perhaps 10 times there is a difference, a population difference, but beside all, our ratio percentage of traveling is less than Indians, and perhaps still we are a nation which claim that traveling is an expense, traveling is not an investment. But I am also observing that paradigm is shifting. Paradigm is shifting, and now more Pakistanis are traveling across the borders. Or inshallah, soon people will ask Indians that, "Are you a Pakistani?" When they find any civilized person, they ask that, "Are you a Pakistani?" And then they have to claim, "No, I am an India."
ठीक है, whatever I believe, inshallah ta'ala, and I am sure about it. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, now this is the time to honor our guest speaker with the souvenir. To represent souvenir to Mr. Shah Jahan, I would like to invite Mr. Abid Malik and Mr. Fakhar Abbas on stage.